This is a list of my stock market gurus who are nothing less than gods to me. And this is the third video of the 3 video series. So मैंने stock market gurus पे 3 videos बनाई हैं. First part, second part, and this, my friend, is the third part. Let's get started. Hi guys, my name is Harshad Goela and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And before moving forward, let me remind you again, we have an entire stock market course from technicals to fundamentals, from trading to investing from the very, very basic level. If you're interested, dost, link description mein hai. Check it out. Now, coming back, this video, let me just fix my seat. This video is the third video of the 3-part series of my stock market gurus. 3-part series, this is the third video. And again reminding you, if you have not watched the first part or the second part, watch them so you will know everyone. Objective kya hai? In this video, I'm going to tell you about my stock market gurus. I'm going to tell you about them, what have I learned from them, and the sources, maybe some books, interviews, जहाँ से आप उनके बारे में सीख सकते हो. ठीक है? And again, reminding you, I am not put anyone in the priority list. I'm not saying this person is better than that person. बिल्कुल भी नहीं. All of them have a very important significance in my life, and all of them are very, very precious to me. Right? So there's no priority order. शुरू करें? चलो. Guru number 1. And guru number 1 is Robert Kiyosaki. Yes. Now what can you say about Robert Kiyosaki? He's brilliant. Right? He's a businessman, he's an investor, and more famously, I think he's known for his author skills, for him being a writer. Why? Because he wrote the ultra famous book of Rich Dad, Poor Dad. Yes, my friends, I like this book so much that we have 3 copies of it. Mine, my father's, and Aditya's. So 3 copies of it. अगर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, suppose, let me just see. As you can see, I don't know if it's visible in the camera. Harsha, happy Diwali. This was on 1st November 2005. So this was dad gifted me. So dad gifted one to Aditya also. So हर book में जैसे हमारी book video में हम लिखते ही हैं. Anyways, so Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Oh my God, he is a legend, right? And he is a hero, not only to me, but to several people around the globe. I meet so many investors, so many traders. सबका पहला point of inspiration ना, Rich Dad, Poor Dad ही होता है. अब मेरी पर्सनल लर्निंग क्या है? नाउ इफ यू लुक एट रॉबर्ट कियोसाकीज इमेज, वो अब इतनी अच्छी नहीं रही है. वाई? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन कि इज ही एक्चुअली अ गुड बिजनेसमैन और नॉट. लॉट ऑफ पीपल आस्क देमसेल्व्स, एंड बहुत कॉन्ट्रिप्लेशन है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इसके अराउंड. अगेन, there are no facts, at least I don't know the facts, and to be very honest, I don't even care about those facts. For me, Robert Kiyosaki is a legend. He is my stock market guru, irrespective of his net worth, irrespective of whether he is actually a good businessman or not. Why am I telling you this? Because he has opened my eyes. That's it. ठीक है, जैसे I'll tell you. अब when I read this book बचपन में, तो पूरा दिमाग खुल गया था. He explained the difference between an asset and a liability to me. I used to think asset liability क्या है, जो accounts में definition में नहीं. Asset something that gives you money, liability something that takes money away from you. जैसे I used to consider a house as an asset, but after reading the book, Robert Kiyosaki taught me that house is not an asset, the land is the asset, house is a liability. जिसमें सबसे पहले ना एक middle class mindset. If you're in the middle class bracket, तब देखोगे you're psychologically designed this way to be middle class. Again, not you, because you are the GSF follower and I make sure आपका mindset ठीक जगह रहा है. But you will see, आपको पता है ना कि अब जैसे बहुत सिंपल चीज़ें, जैसे मिडिल क्लास हमारे घरों में क्या बताते हैं, हाउ टू गेट सिलेक्टेड फॉर अ जॉब. व्हाट डज अ रिच डैड से? हाउ टू सिलेक्ट अ पर्सन फॉर अ जॉब. सो ये माइंडसेट शिफ्ट मैसिवली मेरा रिच डैड पुअर डैड से हुआ है. एंड नॉट ओनली मी, आई एम श्योर आप में से बहुत होंगे हु दिस बुक हैज़ इम्पैक्टेड इन अ वेरी पॉजिटिव वे, एंड दिस हैज़ बीन डन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दिस हैज़ ऑल्सो बीन द बेस्ट नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम्स वॉल स्ट्रीट जर्नल सेलर. सो कोई डाउट्स तो है ही नहीं, इस बुक ने बहुत रिकॉर्ड्स अचीव किए हैं. एंड ठीक है, एंड या, सो दैट्स अबाउट रॉबर्ट कियोसाकी. वेयर कैन यू फाइंड अबाउट हिम? यू, आई थिंक डेफिनेटली सबसे पहला Rich Dad Poor Dad is amazing. Now he has different books also. Now, this is not by Robert Kiyosaki, but based on him. This is the ABC of real estate investment. Okay? So, and the next is the conspiracy of
द रिच डैड, ठीक है, एंड देन इज रिच एंड हैप्पी बाय रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है. सो ऑल दीज बुक्स आर ग्रेट. यू कैन स्टार्ट विद दीज बुक्स. इंटरव्यूज टू रॉबर्ट कियोसाकी हर जगह है. यू फाइंड देम, यू विल हैव सेवरल इंटरव्यूज. एंड येस, सम पीपल अगेन हैव अ लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बट डेफिनेटली ही इज समवन टू लर्न अ लॉट फ्रॉम. ही इज माय गुरु एंड आई रिस्पेक्ट हिम मैसिवली. Okay, Guru number 2, Martin J. Pring. Yes, Martin J. Pring. Now let me tell you about Martin J. Pring. He is the president of Pring Research and chairman of Pring Turner Capital Group. But he's very famous for being a fantastic author. Now Martin J. Pring is one of my, I won't say favorite क्योंकि all gurus are nice है, किसी को favorite नहीं बोल सकते, but definitely he is a very important guru to me in terms of trading. Right? Martin J. Pring, he has done an expertise in trading and behavioral finance. तो he uses sentiments in trading. How does it affect? तो सबसे पहला जो मैं बुक आपको recommend करूँगा is the Martin Pring on market momentum. तो market momentum को using technical analysis, and it's a very nice book. थोड़ा बीच में it gets complicated, so I think to understand this book you need to have a basic idea of technicals. उसके बिना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है. एंड वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट बुक्स इज द इन्वेस्टर साइकोलॉजी एक्सप्लेन बाय मार्टिन जे प्रिंग. इट इज़ सो नाइस. मैंने इसको बांध रखा है यहाँ पे, ठीक कवर है. एज यू कैन सी इट्स वन ऑफ फेवरेट बुक्स. दिवाली पे यहाँ पे, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल ऑन द कैमरा, दिवाली पे यहाँ पे तिलक्स लगे हुए हैं, कितने कितने दिवाली हो गए. एंड दिस बुक आई हैड टू ऑर्डर इट ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड बिकॉज इट अनफॉर्चुनेटली वाज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, सो इट कॉस्टेड मी रियली हैवी. So I think around 2,500 to 3,000 it costed me around this book. But this book, brilliant. It was book की smell, no? So I'll show you the book from inside. So can you see from inside? I don't know if you can see the amount of paintings I've done inside. This is how strong this book is. And Martin J. Pring is an expert in technicals and behavioral. So definitely for all the trader, look into him. Guru number 3. हर्षद मेहता. कम ऑन, अब हर्षद मेहता का नाम तो देखो दोस्तों आना ही आना है. Now, if there is someone who does not know about Harshad Mehta now already, he's an Indian stockbroker. He's a legend in the world. He's a legend in क्या बोल रहा हूँ मैं? He's a legend in the Dalal Street. He is the original big bull. Yes, we have other big bulls को बोलते हैं, but let's be honest, Harshad Mehta देखो हर्षद मेहता ही है, and nobody can take that away. Now, what I learned from him personally, सबसे पहला is that coming from such a humble background, ठीक है, he had the power to tame stock markets. And Harshad Mehta was the person who introduced stock markets to Indians. इससे पहले तो Indians को पता भी ना stock market होता है क्या. Harshad Mehta, अगर आप अभी देखोगे, अभी only 2% retail investors invest in India. 2% of population is linked to equity linked schemes. ठीक है, जो तो हम इंडिया की 2% population invest करिए, उस समय 1992 में ये भी नहीं था. And Harshad Mehta was a person who just made stock markets available for everyone. He made stock markets cool. He made stock markets famous. And yeah, so all of you, I'm sure आप सबने सुना. I remember पहले जब मेरे सेशन होते थे, मैं सबसे पूछा था, do you know who Harshad Mehta is? Let me tell you about Harshad Mehta. The sessions I used to have in 2015, 16, 17, 18, 19. आप देखोगे basics video stock markets much before that. तो ये सेशन में कॉलेज में बहुत देता था. एंड यहाँ पे मैंने हर्षद मेहता की स्टडी बताई है. एंड आई रिमेंबर कॉलेज में पूछा था, हु नोज हर्षद मेहता? सो आउट ऑफ 100-120 पीपल, नो 10-15 पीपल डर डर के रेज देयर हैंड्स कि शायद सुना है. अब लोग मुझे लाइव वेबिनार बोलते हैं, सर हर्षद मेहता ओपी, हर्षद मेहता ओपी. सो या, तो देखो यार, हर्षद मेहता, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम. येस, दैट बीइंग सेड, ही वाज रॉन्ग. व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग. एंड मे बी यार आप अभी मार्केट्स में ना यार, यू डोंट रियलाइज इट, बट इफ आई आस्क समवन, नो, मूवी देखना एक चीज़ है, बट हर्षद मेहता के टाइम लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर हाउसेस. इतना नुकसान हुआ था लोगों का, आई कांट इवन टेल यू. तो डेफिनेटली लॉट ऑफ हॉरर स्टोरीज आई हैव हर्ड ड्यूरिंग द हर्षद मेहता टाइम. सो स्कैरी है, एंड ही वॉज रॉन्ग. आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक हिम ए हीरो बाय एनी मीन्स. ही वॉज रॉन्ग, बट वट आई फील ही वॉज नॉट रॉन्ग फॉर द एवरीथिंग. मतलब ही वॉज ब्लेम फॉर एवरीथिंग. हर चीज़ की गलती वो नहीं थी, पूरे सिस्टम को फॉल्ट होना चाहिए था, नॉट ओनली हिम. सो इट वॉज द सिस्टम. So yeah, so that was the story about Harshad Mehta. Sources, Scam 992, वो आप सबने देखी है. Gafla, YouTube में free movie on Harshad Mehta, definitely have a watch. And Harshad Mehta is my stock market guru for the pure love he had for stock markets, to tame stock market. कि stock markets मेरे control में, that was Harshad Mehta.
And the next guru is राकेश झुंझुनवाला. अब राकेश झुंझुनवाला सर का भी नाम आना बहुत जरूरी था. ठीक है. Now he is one of my personal favorites. Again, all are very nice in 3-part series, but Rakesh Jhunjhunwala is one of my personal favorites. I love watching the interviews. He is famous for his investments in Titan, BEML, Lupin, Crystal, Tata Communication, and after Harshad Mehta, he is known as the big bull. ठीक है. अब बहुत लोग बोलते हैं. And again, please, अगर if you see Scam 992, don't consider him as a villain. Please, that's complete immaturity. ठीक है. So one thing is that. Second, why I like him? Because सबसे पहला एक तो इनकी मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी है ना. जैसे आई रिमेंबर आई वाज सीइंग हिज इंटरव्यू. उस इंटरव्यू में ये लिखा था कि somebody asked that what do you think about India, what do you think about the current chapter. You know what Rakesh Jhunjhunwala said? He said, I don't know where my shares are going to go, I don't know what's going to happen, but I know one thing, I have trust in my country and my countrymen, and that India will do great. आई नो वो चीज़ मुझे इतना हिट की बिकॉज बहुत बार ऐसा लगता है हमें कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है. बट इफ द आर कंट्री इज डूइंग वेल, इफ आर कंट्री मैन आर डूइंग वेल, द स्टॉक प्राइसेस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. सो उस मामले राकेश झुंझुनवाला इज ब्रिलियंट जस्ट टू सी हाउ द आर्ट ऑफ होल्डिंग मल्टी बैगर. आई लव टू स्टडी हिज थिंग्स. आप देखोगे मैंने एक वीडियो दी थी प्रॉपर हाउ टू चूज मल्टी बैगर. उसमें राकेश झुंझुनवाला का मैंने वो पूरा एग्जाम्पल दिया था. राइट, द वर्स्ट इंटरव्यू एवर आई डिड राकेश झुंझुनवाला देयर. एक तो सोर्सेज क्या है बेस्ट. I've seen a lot of Rakesh Jhunjhunwala interviews. I think infinite interviews में राकेश झुंझुनवाला के जो मुझे दिखता है मैं देखता हूँ. And I love the fact they're funny, they're hilarious. ठीक है. एक इंटरव्यू में राकेश झुंझुनवाला बोलता है ट्रेडिंग क्या है. ट्रेडिंग तो देखो फटाफट लो, फटाफट दो, फटाफट लो, फटाफट दो. अपन को फटाफट नहीं चाहिए. मुझे तो बहुत फाइन लगता है. आई डोंट नो, सबका सेंस ऑफ ह्यूमर डिफरेंट होता है. बट यस, राकेश झुंझुनवाला अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड ट्रूली डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट ही हैज ऑलरेडी गार्निश्ड फॉर हिमसेल्फ. The next guru is Chandrakant Sampat. Chandrakant Sampat. Father of a nation कौन है? गांधी जी. You know who is the father of Indian stock markets? For me, it's Chandrakant Sampat sir. Let me tell you about him. Known as India's original value investor, died at the age of 86 just in 2015. And for me, he is the father of Indian stock markets. अब let me tell you his personal story. ये इतनी inspirational है. He started investing in markets in late 1950s and late 1950s and early 1960s. 1950s की बात कर रहा हूँ दोस्त मैं. Bombay Stock Exchange was started in 1875. 1875 में Bombay Stock Exchange started और जब BSE start हुआ था वो पेड़ के नीचे था. And Sensex was introduced in 1979. Sensex was introduced in 1979. He started trading in stock markets, left the family business and came into stock markets in the year 1950s. In 1950s. Can you imagine? अब मैं बताऊँ ये सोच के करता हूँ कि when he must have left his family business. आज की डेट में दोस्त, आज की डेट में किसी को नहीं पता स्टॉक मार्केट्स क्या है. किसी को पूछे स्टॉक मार्केट से nobody knows anything. मैं 1950s की बात कर रहा हूँ बिफोर हर्षद मेहता. As I just told you, हर्षद मेहता was someone who introduced stock market to Indians. In 1950s किसी को नहीं पता होगा. But he had that, I think मतलब Sir Chandrakanta sir must have that true passion for stock markets. आई एम श्योर जब फैमिली बिजनेस छोड़ के, मैं तो बस इमेजिन करता हूँ जब फैमिली बिजनेस छोड़ के ही डिसाइड कि आई एम गोइंग टू बी अ इन्वेस्टर, फैमिली वाले बोलते होंगे क्या ही है स्टॉक मार्केट, मतलब किसी को समझ नहीं आता होगा. आज की डेट में किसी को स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता. आज की डेट में आई हैव स्टूडेंट्स हु व्हेन दे आर ट्राइंग टू टेल द बेटर हाफ और ट्राइंग टू टेल द पेरेंट्स कि आई वांट टू मेक अ करियर स्टॉक मार्केट, उनको पता नहीं स्टॉक मार्केट्स क्या है. कैन यू इमेजिन 1950s की हालत थी. दिस इज बिफोर हर्षद मेहता, दिस इज बिफोर व्हेन सेंसेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. इट्स क्रेजी मैन. मुझे सुन के ना इतना गूज़बम्स देता है. बट दिस he's truly the father of stock markets, right? And some of his multi-baggers were Nestle, Hindustan Unilever, and again, there is not much sources available for him. Interviews तो कुछ है ही नहीं. जितना मैंने सर्च किया मुझे तो कोई भी इंटरव्यू नहीं मिला. अगर आपको कोई मिले तो नीचे प्लीज़ लिखिएगा. देयर बीन आर्टिकल्स एंड देयर आर रूमर्स, देयर ऑल रूमर्स कि उनके पास ये मल्टी बैगर था, ये था. जो मुझे दिखा वो था नेस्ले एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर. बट अगेन आई कुड नॉट हैव स्पेसिफिकली मैंने के बारे में कोई इनकी बुक पढ़ी है या कोई इंटरव्यू देखा है. नहीं, मैंने ज़्यादा कुछ भी इतना नहीं देखा है. बट जितना भी मैंने के बारे में पढ़ा है, आई फील ही इज ट्रूली द फादर ऑफ स्टॉक मार्केट्स. सो इंडियन स्टॉक मार्केट एटलीस्ट. मतलब जस्ट इमेजिन यार 1950s में शुरू किया, 1950s में, एंड ही डाइड इन 2015. तो ही मस्ट हैव सीन द एंटायर स्टॉक मार्केट्स इवॉल्व.
पहले सेंसेक्स स्टार्ट हुआ, फिर बीएससी की बिल्डिंग बनी, बीएससी में लोग आए, फिर 91-92 में जो बीएससी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, देन मतलब ही सॉ 92 क्रैश, देन ही सॉ हर्षद मेहता क्रैश, देन ही सॉ 2000 टेक्सटाइल बर्स्ट, ही सॉ 2008 बर्स्ट, मतलब ही सॉ एवरीथिंग. और स्टॉक मार्केट पहले क्या था, पेड़ के नीचे. अब इन 2015 क्या था, सब कुछ फोन के थ्रू. मतलब जस्ट इमेजिन मैन, हिज ट्रू पैशन वॉज स्टॉक मार्केट्स. एंड या सो मिस्टर चंद्रकांत संपत, द फादर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स, जैसे मैं बोलना चाहूंगा इनको. Okay, the next guru is Bill Gross. Bill H. Gross. Now, Bill H. Gross is an American investor, fund manager, famous for co-founding PIMCO. PIMCO क्या है जो लोगों को नहीं पता है? PIMCO is Pacific Investment Management Company. Pacific Investment Management Company. And Bill Gross ran their $270 billion total return fund. $270 billion total return fund. Total return fund. So, a big name. Now, personal name क्या है? Personal name में ना जो उनका है ना, that you need to make big bets to earn big, and those big bets have to be calculated. तो उस मामले में ही इज डेफिनेटली ब्रिलियंट. मतलब द आई ही हैज हाउ टू एंटर द ग्रोथ स्टॉक्स, हाउ टू लुक इन टू द ग्रोथ स्टॉक्स इज ब्रिलियंट. जस्ट लुक एट हिज इंटरव्यूज. ही विल टॉक अबाउट द इरैशनैलिटी. इरैशनैलिटी क्या है? जब लोगों को पता है दिस इज बेटर, दिस वुड डू वेल, और कॉमन सेंस है, तभी भी पीपल विल डू अगेंस्ट दैट. ही विल टॉक अबाउट दैट. सो बिल एच ग्रॉस, definitely you have to look into him. But yes, only one drawback is that sometimes he uses a little more technical language, so for beginners होता है आपको इतना comfortable ना हो, but otherwise he is a legend. The next guru is Parag Parikh. Right now, Parag Parikh sir is one of my personal favorites. Why is that? Again, please don't confuse him with Ketan Parikh. Ketan Parikh is different. Parag Parikh is different. Parag Parikh went to Harvard Business School. He's one of the best investors. He was. Unfortunately, he passed away in a car crash accident. That's what. And yes, his expertise was in behavioral finance. And I love his books. Parag Parikh sir के काफ़ी आपको YouTube पे sessions मिल जाएंगे. YouTube में आप लिखो Parag Parikh, you will find a lot of sessions, big sessions from him, and he is awesome. ठीक है. So जैसे सबसे पहला Stocks to Riches. This is the book by Parag Parikh. Amazing. He will talk about behavioral finance. मतलब for me, when I was not doing well in markets, जब I think remember first year, second year के बाद, जब मैंने I think काफ़ी TEDx talk जो stock में बोल रखा है, I could not, because technically fundamental is not the full control. You need to have the psychological balance. वो मुझे मिला through Parag Parikh sir. ठीक है. So one book is this, Stocks to Riches by Parag Parikh, which you can read. But the book I highly recommend is Value Investing and Behavioral Finance. Value Investing and Behavioral Finance. Chef's kiss. It's brilliant. अब if I show you ना, तो can you see the tilaks here? थोड़ी चावल कर रहे हैं. Can you see the tilaks here? ठीक है. ये बुक हमारे लिए कितनी प्रेशर है. तो दिवाली पे for people who don't know, हम तिलक लगाते हैं. And you can see the book. It's all colored. Why? Because we make notes. And Value Investing and Behavioral Finance, Parag Parikh, it's so brilliant. Parag Parikh will tell you, and sessions की YouTube में काफ़ी available हैं. Please देखिएगा, they are brilliant. What is the psychology of investor like? और बहुत बार ना, if you're new to stock market, you'll think अरे यार क्या बोल रहे हैं सर, ये तो सेंसिटिव बनता. But actually what he's saying is the ultimate truth. So Parag Parikh sir, definitely. Well, this was the 3-part series. Part 1 of my stock market gurus, part 2 of my stock market gurus, part 3 of my stock market gurus. I have covered them all. In total, I have told you 21 of my stock market gurus. आगे जाके मुझे कोई अच्छा लगता है, if I want to make more, तो मैं बना दूंगा. If you want, मुझे कमेंट करके बताओ. If you want कि हर्ष make a full dedicated video in detail of a specific guru out of all these 3 or this 3 video, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ. Do you want me to make a specific video on some? Do you want me to make a specific video on someone else, on what interviews you are like, and more detail में अभी तो मैंने बहुत आपको जल्दी करके बताया, so that you can start following. नीचे कमेंट करके मुझे बताओ. The entire objective of this is that you get value and nothing else, and you know who are the right people to follow, और आप इनको भी follow करो. Because बहुत बार I remember when I entered stock market at the age of 18, I didn't know who to follow. I didn't know the name of any investor. I didn't know anything. Well, I don't want you going through that same struggle. So this was it. If you like this video, like karo, subscribe karo, niche comment karo, what are your thoughts? Did you already follow these people, or did you not follow these people? Whatever the situation is, niche batao. And webinar का link नीचे है, कोर्स का लिंक नीचे है, एंड ईमेल कम्युनिटी का लिंक नीचे है. वेबिनार इज फ्री.
You're more than welcome to join. Email community is free. More than welcome to join. Well, that's it for today. This is Harsh Goela. Give my regards to your family. Love to your loved ones. Goela School of Finance, financially empowering you.